Hello everyone, welcome to this class. आज हमें यही क्लास रे आरआई, एआरआई अमीन, एसएफएस एंड आईसीडीएस सुपरवाइजर रा कंबाइंड एग्जामिनेशन प्रीलिम्स रा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिवा 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स. आपण एही पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे. ओके, ट्राई करिवा क्वेश्चन नंबर 1. ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 1. Which article of the Indian Constitution deals with the appointment and powers of the governor? Try करिवा. Which article of the Indian Constitution deals with the निजुक्ति एवं क्षमता राज्यपालंकर निजुक्ति एवं क्षमता विषय रे आर्टिकल केते 155 ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर. चूज करचंती समस्ते आर्टिकल 155 is your right answer. मन रखंतु. And what article 161 कोन? Article 161 होची आपनकर pardon power. जेमिति 72 रहउची प्रेसिडेंट को pardon power थाए, सेमिति राज्यपालंकर pardon power रहउची 161. Next. Nanda Devi Peak is located in which Indian state? Nanda Devi Peak केउ भारतीय राज्य रे अवस्थित अटे? नंदा देवी पीक उत्तराखंड हेबो राइट आंसर. ऑप्शन बी उत्तराखंड मन रखन. ठीक अछि. सेकंड हाईएस्ट पीक आफ्टर कांचनजंगा उत्तराखंड रो चेमोली डिस्ट्रिक्ट रे नंदा देवी पीक लोकेटेड अटे. एंड एटा गोटे बायोस्फीयर रिजर्व अटे. नेक्स्ट. Sivasamudram Falls is situated on the bank of which river? Sivasamudram Falls situated on the bank of which river? Sivasamudram Falls. Try करंतु. केउ नदी होई जबा राइट आंसर? रिवर कावेरी. ऑप्शन सी रिवर कावेरी इज योर राइट आंसर. मन रखंतु कावेरी नदी. ठीक अछि. शिवसमुद्रम फॉल्स कर्नाटक रो कावेरी नदी. एंड शिवसमुद्रम फॉल्स गोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन मध्ये अटे. एठारे गोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आल्सो रहिछि. नेक्स्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई रो निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक फंक्शन नुह? आरबीआई रो फंक्शन हेबो नाही. आरबीआई रो देखंतु आरबीआई रो ऑप्शन सी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. डायरेक्टली पब्लिक रु डिपॉजिट को एक्सेप्ट करिवाटा आरबीआई रो गोटिए फंक्शन नुह. करेंसी इशू करि परिबो, इशू करेंसी करि परिबो, बट लाइक आपनकर 1 रुपी एंड कॉइन दैट इज भारत सरकार इशू करिवे. ठीक अछि. केवल 1 रुपी एंड कॉइन को आरबीआई इशू करे नाही. अदरवाइज अन्य समस्त करेंसी नोट को इशू करिवो. मन रखंतु. मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज करे परिबो. ठीक अछि. देन आपनकर कंट्रोल क्रेडिट इन इकोनॉमी एटा भी करै परिबो, बट ऑप्शन सी हेबो नाही. नेक्स्ट. हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? कि अटंती? सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू हेबो यार राइट आंसर. Sarojini Naidu is your right answer. Sarojini Naidu, Nightingale of India. After independence से यूपी रो गवर्नर भाबरे प्रथम महिला गवर्नर थिले. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द वर्ल्ड वाज लॉन्च्ड बाय? प्रथम सैटेलाइट सोवियत यूनियन लॉन्च करथिला. ठीक अछि. सोवियत यूनियन लॉन्च करथिला 1957 रे. ओके. एवं एहार ना थिला स्पुटनिक. मन रखंतु स्पुटनिक थिला यार नेम. दैट इज फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द वर्ल्ड. ओके. स्पुटनिक 1 आई थिंक. स्पुटनिक 1. नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया वाज? प्रथम महिला मुख्यमंत्री के अटंती? प्रथम महिला मुख्यमंत्री होचंती सुचेता कृपालिनी. से गांधी जी जने क्लोज एसोसिएट थिले. ठीक अछि. 1963 टू 67 पर्यंत
उत्तर प्रदेश हि से प्रथम महिला मुख्यमंत्री अटंती। नेक्स्ट, हु रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पेसीज? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज को किए लिखिछंती? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज को किए लिखिछंती? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज को चार्ल्स डार्विन एहाकु लिखिछंती। ऑप्शन सी हेबो यार राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? नाटो रो फुल फॉर्म कोन हबो कोंतु? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? नाटो रो फुल फॉर्म हेउची नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। इंडिया रिसीव्ड इट्स फर्स्ट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ? भारत प्रथम नोबेल प्राइज क्यों क्षेत्र रे पाइथिला? भारत द्वारा प्रथम नोबेल प्राइज लिटरेचर क्षेत्र रे पाइथिला। ठीक अछि, लिटरेचर मन रखंतु रविंद्रनाथ टागोर 1913 रे 1900 केउ मसिया रे परीक्षा आसीबारे 1913 मसिया रे एवं से गीतांजलि पई पाइथिले रविंद्रनाथ टागोर, आर एन टागोर। नेक्स्ट, आग्रा फोर्ट वाज बिल्ट बाय? आग्रा फोर्ट को किए निर्माण करथिले कोन देखिबा? आग्रा फोर्ट वाज बिल्ट बाय अकबर। किए निर्माण करथिले? ऑप्शन बी अकबर इज योर राइट आंसर। 1565 एडी रे आग्रा फोर्ट को निर्माण करा जायतिला। ठीक अछि, एवं एटा गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रो अंतर्भुक्त मध्ये अटे आग्रा फोर्ट। नेक्स्ट, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बेंगल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? बेंगल रो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट को किए इंट्रोड्यूस करथिले? किए इंट्रोड्यूस करथिले? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, 1973 रे मन रखंतु इंट्रोड्यूस करथिले। नेक्स्ट, एटम बम इज बेस्ड ऑन? एटम बम कोन बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन हबो मन रखंतु। एटम बम रो जदि कथा आसीबो फिजन, हाइड्रोजन बम रो जदि कथा आसीबो फ्यूजन। ठीक अछि, हाइड्रोजन बम टा फ्यूजन, एटम बम फिजन। नेक्स्ट, आयरन रस्ट क्विकली इन? आयरन रस्ट हबो क्विकली इन सी वाटर। ठीक अछि, बिकॉज एथिरे हाई सोडियम क्लोराइड थाए, दैट्स व्हाई। ठीक अछि, एंड स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अटे, सो दैट ऑक्सीडेशन रो प्रोसेस बहुत फास्ट हेबो, आयरन रस्ट हबो शीघ्र। क्लियर? नेक्स्ट, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज? क्यों एलिमेंट टी साधारणतः समस्त एसिड रे आपण देखिया पई पाइबे? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज योर राइट आंसर मन रखंतु। व्हिच ऑप्शन? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बिकॉज जेतळे एटा वाटर रे डिसॉल्व हबो H+ आयन प्रदान करिवो। व्हिच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नोन एज स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया? भुवनेश्वर। ठीक अछि, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, स्पोर्ट्स कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which year was Odisha Cricket Association was formed? Odisha Cricket Association 1949 रे गठन करा जायतिला। नेक्स्ट, अनुराधा विश्वाल इज एसोसिएटेड विथ? अनुराधा विश्वाल जने कोन थिले? एथलेटिक्स। ठीक अछि, एथलेटिक्स हबो यार राइट आंसर। Which of the following is the highest literary award of Odisha? ओडिशा रो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होची अतिबड़ी जगन्नाथ दास अवार्ड, अतिबड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार। इन व्हिच ईयर ओडिशा साहित्य एकेडमी वाज एस्टैब्लिश्ड? ओडिशा साहित्य एकेडमी 1957 रे प्रतिष्ठा करा जायतिला। ओके, देन जिबा हमें इंग्लिश रो 20 क्वेश्चंस। You dash take leave now. Your application form is submitted. Could, would, may, will. Which option is your right answer? Try करंतु। You dash take leave now. Your application form is submitted. You may leave now. ठीक अछि, may टा आपनकर गोटे परमिशन सेंस रे आसी परिबो। would आपनकर past रो एबिलिटी और गोटे पोलाइट रिक्वेस्ट। would कोन किछि कंडीशन और फ्यूचर रो पास्ट पई, will फ्यूचर एक्शन पई, दैट्स व्हाई you may take leave now. Your application form is submitted.
children only for the purpose of educating them. His purpose is to feed them for life. Appropriate option को choose करिवा. That what this hour. Okay, देखंतु एटारे what purpose आसु नाही. This purpose भी कहबाटा ठीक हबनी. Hour ही पारे किबा that ही पारे. But children only for the purpose of educating them. Our purpose एठारे कोन अछि सेमिकोलन अछि माने या विषय रे पुनी थरे एठारे आरंभ करा जिवो. तो जेतल आवर कहबा दुईटा क्लोज रो मीनिंग अलगा आसी होची तो एटा भी हबो नाही दैट कहबा बिकॉज़ दैट कोन करिवो यार प्रीवियस क्लोज को रिलेट करेवो. ठीक अछि. दैट पर्पस इज फिट टू देम फॉर लाइफ. हबो राइट आंसर. द इंडियन गवर्नमेंट हैज asked the UN for the current climate crisis को नेकी ट्राई करंतु. भारत सरकार हैज पर कोन आसीबो एठी वर्ब रो थर्ड फॉर्म आसीबो राइट. दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे कोन जाईची सेंटेंस टी. तो कोन हेजिबो एठी साउट हबो. साउट सीक रो सीक्ड नो साउट हो यार वर्ब रो थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट. In April last year, this Reserve Bank of India issued a directive on storage of payment system data. Reserve Bank of India पूर्वरु केउ आर्टिकल आसीबो AND और नो आर्टिकल जेतु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोन गोटे इंस्टीट्यूट ठीक अछि गोटे अनुष्ठान अनुष्ठान पूर्वरु आर्टिकल तो यूज करा जाय. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज योर राइट आंसर. ओके. Next, the manager has dash in a case registered under IPC. The manager has पर that is passive रे रखा जिवो ठीक अछि because धरा गला सही सेंस रे so has been held. Option B is your right answer. Okay. Next, I stayed in bed dash 7:30 because कटिबो beside कटिबो ठीक अछि. by आसी पारे किबा until आसी पारे दुईटा टाइम सेंस रे. I stayed in bed by 7:30 हबो और until 7:30 हबो. देखंतु जदि हमें by यूज करिबा by टा कोन निर्धारित समय सुधा until माने up to 7:30 तो by to appropriate until लागुछि तो until को चूज करिबा ठीक अछि. I stayed in bed until 7:30. if by यूज करिबा ताले then आउ किछि रेफरेंस तो आसु नाही. that's why हमें ऑप्शन डी को चूज करि परिबा. नेक्स्ट. Johan and Lee dash to go to the films. Johan and Lee ठीक अछि. Johan and Lee that is subject 1 that is subject 2. तो दुईटा सब्जेक्ट आसीर कोन हला सब्जेक्ट आपनकर सब्जेक्टिव केस रे जा अछि that is plural. देन एठारे verb मध्ये कोन आसीबो plural ही आसीबो according to subject and verb agreement. ताले कोन हबो देखंतु to go to अछि infinite अछि it means present simple रे रखिबा simply like ही हबो. ऑप्शन ए हबो राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट. the complaints are categorized by them अछि it means already इटा आपनकर पैसिव वॉइस रे अछि. ओके. एहार एक्टिव वॉइस कोन हबो कोंतु. एहार एक्टिव वॉइस कोन हबो कोंतु. by परे them अछि माने कोन आसीबो they आसीबो. are categorized अछि माने simple tense रे रखिबा present रो simple रे. they categorize the complaints. Option D is your right answer. एहार एक्टिव वॉइस. Zubin said let us decide the matter together. Okay. एहार narration कोन हबो कोंतु. डायरेक्ट स्पीच रु इनडायरेक्ट स्पीच रे कन्वर्ट करिबा. Zubin said let us decide the matter together. Let us see तो सिंपली कोन करा जिवो Zubin suggested that they should decide the matter together. Option C is your right answer. ठीक अछि. ऑप्शन सी एहरो राइट आंसर लागुछि. They visit this orphanage every year. ओके. एहारो पैसिव वॉइस कोन हबो एटा अछि आपनर एक्टिव वॉइस रे. एहारो पैसिव वॉइस कोन हबो कोंतु. They visit this orphanage every year. Visit अछि सिंपल अछि कोन हेजिवो this orphanage is visited by them every year. Option B is your right answer. Next.
I am going to write dash letter for my friend. I am going to write a letter. Very simple. A letter because it happen or consonant sound. That's why a letter have right answer. Next. She went to the wrong address as mistake. Through mistake, in mistake, by mistake, with mistake. By mistake. Option C is your right answer. By mistake habo. India always dash neutral during the conflicts between nations. भारत कौन रहे न्यूट्रल रहे तो remain और remains हबो remains present simple अनुसार because India third person गोटे name third person singular that's why verb रे s लगी that is singular remains neutral. Next, in these days very days thesis are the thesis माने कौन theories. Okay, theory को plural रे thesis are the result of a proper research discipline. It means कौन in these days आजिकली कौन होची बहुत कम होची से सेंस रे तो हमें few कहि परिबा because एटा plural रे अछि little गोटे uncountable पई every किबा a few हबो नाही. Few theses are the result of a proper research discipline. Next, attribute ର synonym कौन हबो कोंतु attribute ର synonym कौन हबो similar meaning ट्राई करिबा. Attribute means what? Attribute means गोटे character बा गोटे quality. Option D हबो यार right answer. Next, hostility रो synonym hostility रो similar meaning कौन हबो hostility hostility माने शत्रुता enmity. Option A हबो right answer. Next, scarce रो antonym opposite meaning scarce माने कौन opposite meaning scarce से अभाव से सेंस रे plentiful प्रचुर परिमाण रे we can say. extravagant रो antonym extravagant माने जदि हमें बुझिबा जे आवश्यकता ठारू अधिका खर्च करंती that is extravagant. ओके अनावश्यक खर्च तर antonym opposite meaning माने कौन that is your thrifty माने आवश्यकता अनुसार जे खर्च करिबा related to money. Select correct spelled निम्नलिखित मध्यरु केउ ऑप्शन रे अछि ऑप्शन बी abundance abundance is your right answer प्रचुर abundance. Next, select correct spelled maintenance 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 is your right answer. Okay, then जिबा हमें ओडिया रो प्रश्न रहिछि ट्राई करिबा. गछरे फूल फुटी अछि रेखांकित शब्दटीर कारक निर्णय कर. गछरे केउ कारक होइजिवो अधिकरण कारक. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. विजय बाबू व्याकरण रे प्रवीण व्याकरण रे केउ कारक व्याकरण रे अर्थ रे कोन होइजिवो एटा मध्ये आपनकर अधिकरण कारक हबो. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. वार्धक्य शब्दटी की प्रकार विशेष्य वार्धक्य कोन गोटे अवस्था ठीक अछि वस्तु क्रिया किंबा व्यक्ति हबनी गुणवाचक विशेष्य. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, एबे सचिन बैटिंग करूछंती रेखांकित शब्दटी की प्रकार कर्ता किए बैटिंग करूछंती सचिन एक मुख्य कर्ता अटे. नेक्स्ट, अनुराग विशेषण पद रे परिणत कर. अनुराग को विशेषण पद रे परिणत करले कोन हबो अनुराग अनुरक्त. ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ रो संधि विच्छेद कर. जगन्नाथ कोन हिजो जगत युक्त नाथ जगन्नाथ. दिगंत संधि विच्छेद कर. दिगंत रो संधि विच्छेद कोन हबो दिक युक्त अंत दिगंत. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. कष्ट कले कृष्ण मिले एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी कोन. कष्ट कले कृष्ण मिले एही अर्थ प्रकाश करुथिबा लोकवाणीटी होची साधन ही सिद्धिर जनक. साधन ही सिद्धिर जनक. ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. अरण्य रोदन एही रूढ़ीर अर्थ कोन. अरण्य रोदन ट्राई करंतु. अरण्य रोदनर अर्थ हेउची वृथा प्रार्थना. कोन हे जिवो वृथा प्रार्थना हेबो राइट आंसर. नेक्स्ट,
ମଣ୍ଡଳୀ ଶବ୍ଦର ପୁଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। ମଣ୍ଡଳୀ ଶବ୍ଦର ପୁଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦଟି କଣ ହେବ? ମଣ୍ଡଳ। ଅପସନ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଚ ଛ ନ ଠ କେଉଁଟି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ଚ ଛ ନ ଏବଂ ଠ ମଧ୍ୟରେ ଠ ହେବ ଏକ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଧିକ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ଧିକ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଅପସନ ବି ଇଜ ୟୋର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଅ ଔ ଏହି ଦୁଇଟି କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ? ଅ ଔ ଏହି ଦୁଇଟି କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି? ଅ ଔ ଦୁଇଟି କଣ୍ଠସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଅପସନ ଡି ଇଜ ୟୋର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବିଦୁଷୀ ଶବ୍ଦଟି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଏଟାକୁ। ଠିକ ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ବିଦୁଷୀ ଶବ୍ଦଟି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ? ବିଦୁଷୀ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବିଦ୍ୱାନର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ୟୋର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଗୋପାଳ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାମଟି କରାଇଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତା? ଗୋପାଳ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାମଟି କରାଇଲେ। ଗୋପାଳ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାମଟି କରାଇଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଗୋପାଳ ହେବ ଏକ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ନେକ୍ସଟ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଶବ୍ଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ଋଷିକୁଲ୍ୟା ହେବ ଏକ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ଗହୀର ଶବ୍ଦର ମୂଳ ତତ୍ସମ ରୂପଟି କଣ ହେବ? ଗହୀର ଶବ୍ଦର ମୂଳ ତତ୍ସମ ରୂପଟି ହେଉଛି ଗଭୀର। ଅପସନ ଡି ଇଜ ୟୋର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କଣ ହେଇଯିବ? ଗଭୀର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଖେଚର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସମାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ? ଖେଚର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସମାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ? ଖେଚର ଶବ୍ଦଟି ଅଲୁକ ସମାସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ନି ହି ଯୁକ୍ତ ରବ ନୀରବ। ଅପସନ ଡି ଇଜ ୟୋର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଗାୟକ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ଗାୟକ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ଗାୟକ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଗାୟକ। ଅପସନ ବି ଇଜ ୟୋର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ରିଜନିଂ ର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଟ୍ରାଏ କରିବା। फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट ट्राई करंतु। ओके, व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर? एठारे केउ लॉजिक टी अप्लाई अछि आपन को देखिबार अछि। ऑड वन आउट 14:33, 8:25, 5:15, 9:23। देखो 14 एंड 33 भितरे रिलेशन कोन रहिछि? एठारे जदि हम देखिबा 14 को मल्टीप्लाई 2 करिवा, दैट इज केते आछि? 28। तो 28 रे जतले आपण 5 ऐड करिवे, दैट इज आसला आपनकर 35 आसला। ऑप्शन बी देखिबा 8 मल्टीप्लाई 2 करिवा, दैट इज केते होछि? 16 प्लस 9 ऐड हेले आपनकर 25 आछि। ऑप्शन सी देखिबा 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 10 प्लस 5 दैट इज 15। ऑप्शन डी 9 multiply 2 that is 18 plus 5 that is 23। then कहंतु clearly visible होची that is एटा आपनकर कोन हबो? odd one out आसीबो। बिकॉज़ देखंतु each केस रे आपण गिवन नंबर को डबल करिया पर सेथि जदि 5 ऐड करिवे ताहाले आपनकर रिजल्ट नंबर आसी। बट एठी कोन 9 ऐड करिया पई पड़े, that is different। that's why option B हबो यार राइट आंसर। समस्त आंसर आछि। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल। एथिरे आपनकर केतोटी ट्रायंगल अछि काउंट करंतु। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 नौटा दैट इज स्मॉल ट्रायंगल। देन आपनकर गोटे रहला कोन? एटा होची आपनकर गोटे बड़ ट्रायंगल। ओके, गोटे बड़ ट्रायंगल। देन देखंतु, देन आपनकर कंबाइंड ट्रायंगल। एटा गोटे ट्रायंगल आसीबो। ओके, एटा आसीबो गोटिए दुईटा, ठीक अछि। देन तीनोटी प्लस 3 कंबाइंड ट्रायंगल, दैट इज केतोटी ट्रायंगल आसला? 13टी ट्रायंगल एथे आपण पाइबे। ऑप्शन बी हबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ocean is related to water in the same way desert is related to कौन हबो कहंतु ocean जदि आपनकर water सहित रिलेशन रहुची ताले डेजर्ट रो का सहित रिलेशन रही देखंतु ocean रो मेन कंपोनेंट होची वाटर और वी कैन से ocean टा होची होल वाटर होची तार गोटे पार्ट इन द सेम वे डेजर्ट रो मेन कंपोनेंट कौन हबो सैंड हबो इट मींस डेजर्ट टा होल सैंड होची तार पार्ट डेजर्ट सैंड को नेकी डेजर्ट नेक्स्ट डाइस इज रिलेटेड टू जदि क्यूब हुए ताहले बॉल इज रिलेटेड टू कौन हबो डाइस रो गोटे वी कैन से गोटे शेप होची क्यूब सेमिति बॉल रो कोन हिजो स्फीयर आसीबो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट इफ CAB ठीक है कोडिंग एंड डिकोडिंग रो प्रश्न इफ CAB इक्वल्स टू 12 एंड FED इक्वल्स टू 30 देन HID कोन ताले एठारे देखंतु केउ लॉजिक काम करूची प्रत्येक रो पोजीशन लेटर लिखिबा C होची 3 प्लस A होची 1 B होची 2 दैट इज केता आसीबो 3 + 1 4 + 2 6 6 multiply 2 परिबा पर 12 आसुची एटा देखिबा FED F टा कोन होची आपनकर F होची 6 E होची 5 D होची 4 तो 5 11 4 15 multiply 2 that is आपनकर 30 आसिला in the same way H टा होची 8 plus I होची 9 D होची 4 E होची 5 ऐड करंतु केता आसी 5 4 9 9 9 18 18 8 26 26 गुणन 2 आसीबो आपनकर 52 is your right answer एठार केता आसीबो 52 आसीबो तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर समस्त आंसर आछि नेक्स्ट इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ROCKS is written as 82649 and mentor eta rocks thila eta mentor is written as 01578 what is the code for TROMN in the code language try karantu what is the code for TROMN in the code language which option is your right answer question number 66 okay then which option आसीबो आपन राइट आंसर देखंतु एठी को गला TROMN एठारे कोन अछि आपनकर रॉक्स रे थिबा मेंटर रे थिबा समस्त लेटर रो वैल्यू होची हा ठीक अछि एथरे मध्ये वैल्यू होची हा ताले T रो वैल्यू कोन अछि देखंतु एठारे देखंतु T रो वैल्यू कोन आसीबो दैट इज 7 आसीबो तो T रो वैल्यू हमें 7 रखिबा R रो वैल्यू कोन अछि देखंतु एठारे R रो वैल्यू कोन अछि 8 अछि 7 परे 8 आसीबो O रो वैल्यू कोन आसीबो देखिबा O R परे O अछि O रो वैल्यू होची 2 ठीक अछि माने एठी 2 आसीबो M रो वैल्यू कोन अछि M रो वैल्यू होची 0 M रो वैल्यू 0 रहिबो देन N रो वैल्यू अरे N रो वैल्यू कोन अछि 5 अछि तो 5 रहिबो राइट तो ऑप्शन 78205 is your right answer बुझिला कोडिंग एंड डिकोडिंग रो प्रश्न नेक्स्ट फिल द सीरीज 116 128 146 170 200 या पर कोन आसीबो कोंतु ए सीरीज टी को फिल करंतु देखंतु 116 टा आपनकर 128 हला माने एठी आपनकर 12 ऐड हला 12 ऐड हला 128 टा 146 होची ताहले 18 ऐड होची 146 टा 170 होची माने कोन होची एठारे आपनकर 24 ऐड हला देन 170 टा 200 हला माने एठारे 30 ऐड हला ओके ताले 12 टू 8 8 बढ़िला 8 टू 18 टू 24 ठीक अछि 18 टू 24 आपनकर 12 बढ़िला देन 24 टू 30 आपनकर 18 टू 24 सॉरी 18 टू 24 एठारे केउ लॉजिक काम करछि देखंतु प्रथमे 12 बढ़िला देन यहाँ पर 18 बढ़िला 116 टू 28 केते बढ़िला 12 बढ़िला देन आपनकर 18 बढ़िला देन केते बढ़िला 18 परे 24 बढ़िला
देन एठारे 30 बढ़िला माने 12 टू 18 6 बढ़िला देन एठी 6 बढ़ुची देन एठी 6 बढ़ुची देन एठी मध्ये कोन हो 6 बढ़िबो एठी 36 हबो 200 रे 36 ऐड हबो 236 आसीबो हेरो राइट आंसर 236 ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट R C T E V देन कोन हबो देन x अछि I अछि ट्राई करंतु प्रत्येकर पोजीशन प्रत्येकर लेटर रो पोजीशन नंबर लिखिबा R रहउची 18 G रहउची 3 T रहउची 20 E रहउची 5 T रहउची 22 X रहउची 25 I रहउची 9 ताले देखंतु 18 आपनकर 20 हला +2 प्लस extra 24 then +2 सेमिति 3 आपनकर 5 होची 5 रे पुनी थरे +2 हबो मींस 7 आसीबो तो 7 रो वैल्यू होची इट मींस 0 वैल्यू होची 7 तो ऑप्शन सी हबो राइट आंसर अल्टरनेटिवली आपनकर कोन होची +2 इंक्रीज होची ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 69 A and B are brothers of C. B is the son of D and E. D is the daughter of F. P is the father-in-law of E. How is A related to P? ताले A P रो कोन हबो से पचारिछि A P रो कोन हबो ब्लड रिलेशन रो प्रश्न A and B are brother of C ठीक अछि brother of C माने करो एठी C नबा C रो ब्रदर किए A and B देखंतु मो मेल को रिप्रेजेंट करूची दैट इज ट्रायंगल रे एंड फीमेल को रिप्रेजेंट करबी सर्कल रे सो दैट इजी हो A and B आर कोन ब्रदर अटंती कार C रो माने A होची ब्रदर मेल B होची ब्रदर देन कोआ गला B इज द सन ऑफ D B कार सन D रो सन D and E रो सन D is the daughter D जदि डॉटर हुए ताले से कोन करछि E को मैरिज करछि कार D is the son of D is the daughter of F okay P is the father-in-law of E P is the father-in-law of E P father-in-law हेले F होछि तार वाइफ ठीक अछि ताले how is A related to P A P को कोन हे जिवो A P को कोन हे जिवो ग्रैंडसन हे जिवो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझियला A P को कोन हे जिवो grandson हो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 G is the grandfather of S B has only two sons E and F A and B are the only son of G who is the father of S who is the father of S try करंतु क्वेश्चन नंबर 70 ब्लड रिलेशन रो क्वेश्चन who is the father of S केमिति करिवा G is the grandfather of S माने एठी जदि S रहिबो ताले एठी गोटे जनरेशन देन आसीबो एठी आपनकर G B has only two son माने कर एठी हमें B रखिबा B रो कोन दुई जण सन अटंती के दुई जण सन E and F दुई जण सन मेल को हमें ट्रायंगल रे रिप्रेजेंट करिवा ओके B रो दुई जण सन A and B are only son of G A and B are only son of G ठीक अछि G रो मध्ये कोन दुई जण सन अटंती ताले who is the father of S S रो फादर के हिजो ए हबो ठीक अछि S रो फादर ए हबो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट फाइंड करेक्ट वेन डायग्राम ठीक अछि आपन को करेक्ट वेन डायग्राम चूज करिवार अछि क्वेश्चन नंबर 71 कैट देन असले आपन को मैमल एंड पैरट कैट कोन हबो मैमल रो कैटेगरी रे आसीबो तो पैरट होची बर्ड पैरट होची कोन बर्ड दैट्स व्हाई व्हिच ऑप्शन हबो ऑप्शन बी तो ठीक लागुची ठीक अछि कैट गोटे मैमल हे परिबो एंड पैरट आपन को अलग आसीबो गोटे बर्ड कैटेगरी रे आसीबो
ओके नेक्स्ट फाइंड करेक्ट वेन डायग्राम वेजिटेबल्स ब्रिंजल एप्पल ब्रिंजल आसीजिव आपनकर वेजिटेबल रो कैटेगरी एप्पल कोन आसीजिव फ्रूट आसीजिव दैट्स व्हाई ऑप्शन सी ठीक लागुची ब्रिंजल टा कोन आसीजिव वेजिटेबल हबो बट एप्पल आपनकर फ्रूट आसीजिव नेक्स्ट व्हिच साइन इंटरचेंज टू करेक्ट इट आपण निम्नोक्त मध्यरु केउ ऑप्शन रो साइन को इंटरचेंज करिवे सो दैट LHS इक्वल टू RHS आसीबो और रिजल्ट 56 आसीबो ट्राई करंतु व्हिच साइन को इंटरचेंज करिवा द्वारा ट्राई करले समस्त देखंतु माइनस एंड प्लस को आपण इंटरचेंज करंतु सो दैट आपनकर आंसर 56 आसीबो 73 माइनस जगह कोन रखिबा प्लस 13 मल्टीप्लाई 42 डिवीजन 14 प्लस जगह माइनस 56 क्लियर ताले 73 प्लस 13 मल्टीप्लाई देखंतु 14 हरण 14 टा केते आसीबो गुणन 3 माइनस 6 ओके ताले 73 प्लस गुणन आसीबो 13 3 39 माइनस 56 एटा केते आछी 9 3 12 112 माइनस 56 इक्वल टू दैट इज 56 आसीबो आपनकर रिजल्ट ओके सो आपण जदी माइनस जगह प्लस एंड प्लस जगह माइनस इंटरचेंज करिवे ताहले करेक्ट ऑप्शन आसीबो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 74 व्हिच साइन इंटरचेंज टू करेक्ट इट ट्राई करिवा क्वेश्चन नंबर 74 व्हिच साइन इंटरचेंज टू करेक्ट इट ऑप्शन डी करंतु प्लस जगह रे मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई जगह रे प्लस करिया देखंतु आंसर आछि 9 मल्टीप्लाई अछि प्लस करिवा 11 हरण 31 प्लस अछि मल्टीप्लाई हबो मल्टीप्लाई 62 माइनस 13 ओके ताले देखंतु 9 प्लस 11 बाई 31 गुणन 62 माइनस 13 एटा केतरे जीवो आपनकर 31 हेले एटा 2 रे कटुची ओके ताले 9 प्लस 22 माइनस 13 ओके 22 9 केते आसीबो आपनकर 31 ना 31 माइनस 13 दैट इज केते आसी देखंतु 18 आसी तो दैट इज योर राइट आंसर ओके 18 is your right answer it means option D को जदी आपण इंटरचेंज करेबे option D अनुसार ताले आपण रिजल्ट आसीबो और LHS equal to RHS आसीबो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 ट्राई करबा if south east becomes north north east becomes west and so on what will south west become ट्राई करबा हमर कोन अछि चारोटी मेजर डायरेक्शन अछि एवं अन्य चारोटी रहिला सब डायरेक्शन दैट इज आपनकर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ओके एटा होची नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से कहूची साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ हला देखंतु साउथ ईस्ट टा कोन होची आपनकर नॉर्थ होची साउथ ईस्ट टा कोन होची नॉर्थ होची माने कोन एटा होची 30 डिग्री सॉरी 45 डिग्री ना एटा 45 डिग्री 45 डिग्री इट मींस 135 डिग्री मूव करूची 135 डिग्री कोन एटा एंटी क्लॉकवाइज मूव करूची ओके then north east becomes west हला north east देखंतु एटा होची north east become कोन हला west हला it means 45 north east become west हला
north east become west 45 degree 45 degree 45 degree এটি মধ্যে কোন হচ্ছে 135 degree রাইট 135 degree হচ্ছে তো এটি মধ্যে কোন হচ্ছে 135 degree anti clockwise মুভ করছে ঠিক আছে north east become north east become that is এটা ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 90 degree then that is এটা 1 সরি 8 হবো না north east মানে 8 হଯିବ 8 হଯିବ ওকে তো তাহলে ଆପଣଙ୍କର 135 degree ଆସୁଛି କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ କହୁଛି and so on what will south west କଣ ହବ south west ଟା କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ହଯିବ that is south west କ୍ଲିୟର east ଆସିଯିବ এটা মধ্যে কোন হবো 135 ডিগ্রি হবো 45 45 90 45 135 east ଆସିଯିବ that is also 135 degree anti clockwise ଯିବ ତାହେଲେ result ଆସିବ east which option option C is your right answer ସମସ୍ତଙ୍କର answer ଆସିଛି east is your right answer clearly ବୁଝି ହେଲା next question ଯିବା question number 76 Inna is the 75 meter southeast of Bhina Rina is to the 75 meter southwest of Bhina Tina is to the dash of Rina try କରନ୍ତୁ direction ର question Tina is the 75 meter southeast of Bhina ମନେକର ମୁଁ ଏଠି ଭିନା ରଖୁଛି ତାହେଲେ ଭିନାର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଟା କୋଉଟା ହବ ଏଟା ହବ ଏଠି କଣ ଅଛି ଟିନା ଅଛି ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ 75 ମିଟର ରିନା ଇଜ ଟୁ ଦ 75 ମିଟର ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଭିନା ରିନା କଣ ଅଛି ଇଜ ଟୁ ଦ 75 ମିଟର ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇପଟେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇପଟେ ଏପଟେ କଣ ଅଛି কি ଅଛି ଏଠାରେ ରିନା ଅଛି okay that is 75 meter তাহলে টিনা is to the dash of রিনা টিনা রিନା ର କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଅଛି টিନା ରିନା ର ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଅଛି ଅପସନ ଏ ହବ ଏହାର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିଛି ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ ଇଜ ୟୋର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 77 statement and conclusion ର क्वेश्चन ରହିଲା statement କଣ କହୁଛି the government has decided to increase the tax on luxury items conclusion ଆସିଲା people who buy luxury items will reduce their purchase and conclusion 2 the government will earn more revenue from luxury items Hello, which option is your right answer question number 77 question number 77 which option is your right answer The government has decided to increase सरकार कौन कले निष्पत्ति नेले टैक्स को लग्जरी आइटम ऊपर थिबा टैक्स को वृद्धि करिवा ओके अच्छा people who buy luxury items will reduce their purchase option 1 को जदि हमें conclusion 1 को जदि आपण देखिबे लोक माने कोन करिवे सेमानकर परचेस पावर को कमे देई परिवे लग्जरी आइटम ऊपर ही पारे कि न ही पारे ठीक अछि if people are interested then they can buy the government will earn more revenue from luxury item सरकार एथिरु कोन हे परिबो अधिक टंका रोजगार करिवार तो प्रश्न उठु नाही सो आई थिंक ऑप्शन डी ठीक हबो ठीक अछि ऑप्शन डी neither one nor two follows ठीक लाଗୁଛି तो आपण कमेंट सेक्शन रे टी जणाइबे क्वेश्चन नंबर 77 रो appropriate option कोन हबो statement and conclusion रो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 complete the figure तो এই फिगर टी कंप्लीट करंतु के ऑप्शन आसीबो एठारे आपण को कंप्लीट करिवार अछि एठारे आपण देखंतु ऑप्शन बी तो कटुची
ऑप्शन बी परे ऑप्शन बी तो कटुची ना और ऑप्शन बी ठीक लगुच ऑप्शन बी तो कटु नाही देखंतु एटा भलो भाबरे क्यों ऑप्शन आसीबो राइट आंसर ऑप्शन सी कटिबो देखंतु एटा टिके बाहर को आछि एटा जदि आपण कंप्लीट करिवे फिगर टी देन एमिति एमिति आसीबो ओके ऑप्शन बी ही ठीक लगुच ऑप्शन बी हबो यारो राइट आंसर क्लियर ऑप्शन बी is your right answer. Next question number 73. Find mirror image. यार mirror image कौन हो कुंतो इटा होची mirror. तो यार mirror image टा इपटे आसीबो. ताले क्यों ऑप्शन is right answer. Find mirror image. ट्राई करियो. यार mirror image देखंतु ऑप्शन बी ही ठीक लाଗୁଛି. ऑप्शन बी आसीबो यार mirror image. Next. Find mirror image. এই ফিগরটির mirror image নিম্নোক্ত মধ্যରୁ কেউটা ଆସୁଛି এই ফিগরটির mirror image দেখন্তু ऑप्शन ए को जदि आमे भल भाबरे देखिबा ऑप्शन सी तो हबनी ऑप्शन डी हबनी ए एंड एटा को देखন্তু ताले एटा आसीबो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट आसला आपनकर गणितर प्रश्न गणितर 20 क्वेश्चन रही आम लास्ट पार्ट रे आसी पहुंची जाइछन ट्राई करिवा गणितर 20 क्वेश्चन अछि ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 81 if the average of x plus 2 x square and x plus 4 is x plus 3 ताले what is the value of x कोन कहिछि x plus x plus 2 plus x रो स्क्वायर plus x plus 4 रो एवरेज माने कोन that is चारोटी एठारे टर्म रहिछि that is x plus 3 ताहाले x केते हबो एठी पचारिछि देखंतु x x x x square plus 3x 3x plus 4 2 6 by 4 that is होछि x plus 3 it means finally आपनकर x square plus 3x plus 6 that is 4x plus 12 एटा सॉल्व करंतु तो एटा जतले आपण सॉल्व करिवे कोन आसीबो एटा x रो स्क्वायर plus 3x minus 4x 3x minus देखंतु 3x minus 4x मु लिखि दोछि गोटे स्टेप 3x minus 4x plus 6 minus 12 equal to 0 it means x रो स्क्वायर minus x minus 6 equal to 0 तो एटा को सॉल्व करले आपण जतले फैक्टर बाहर करिवे एठी कोन आसीबो x रो स्क्वायर minus 2x minus 3x minus 6 equal to 0 ठीक अछि एटा आपनकर बिकॉज़ एटा कोन ax square plus bx plus c equal to गोटे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म रे अछि ओके ताले एठी फैक्टर बाहर करंतु एटा को आपण सॉल्व करिवे ताले फैक्टर आसीबो आपनकर x plus 2 गोटे आसीबो आउटे x minus 3 आसीबो equal to 0 x plus 2 टा हबनी बिकॉज़ x plus 2 equal to 0 हले दैट इज माइनस रे आसीबो x रो वैल्यू आसीबो 3 इज योर राइट आंसर ऑप्शन सी हबो यार राइट आंसर बुझियला ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 the average of a and b is 36 the average of b and c is 42 what is the difference between c and a plus b by 2 average that is 36 b plus c by 2 average that is 42 okay ताहले से प्रश्न पचारुची एठारे सी आ ए रो एवरेज केते आसीबो हां एवरेज पचारनी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए केते हो एटा जदि एवरेज हो सम टा केते आसीबो a plus b आपनकर आसी जिवो 72 सेमिति b plus c केते आसीबो दैट इज 84 ताले इथे आपण डिफरेंस बाहर कर दियंतु b को b कटिवो c minus a केते आसीबो 84 minus 72 that is 12 as your right answer
Option B is your right answer. Okay. Next question number 83. Convert 0.8752 to vulgar fraction. 0.875 ଅଛି. It means କ'ଣ decimal ପରେ କେତୋଟି digit ଅଛି 3 digit ଅଛି 875 by 1000 1 ରେ 3ଟି 0 ରହିବ. ଓକେ ତାହେଲେ এটা କଟାକଟି କରନ୍ତୁ କେତେ ଆସୁଛି এটা ଆପଣ କଟାକଟି କରନ୍ତୁ. ଏଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ 25 ରେ କାଟନ୍ତୁ 25 ଚୌକୁ 100 then 0 25 3 75 75 ପରେ କେତେ ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ 5 ଏପଟେ 7 125 25 5 125 तो 35 by 40 आसला तो 5 सतना 35 5 अष्टा 40 7 by 8 is your right answer. Option है वो यार right answer. समस्त का आंसर आछि. Next question number 84 try करिवा. What is the difference between biggest and smallest fraction among? ठीक अछि biggest and smallest fraction मध्ये difference केते आछिबो से पचारिछि. Biggest and smallest fraction मध्ये difference केते आसीबो से पचारिछि. ट्राई करंतु. What is the difference between biggest? Simply देखंतु biggest and smallest fraction आपण केमिति बाहर करिवे. आपण क्रॉस मल्टीप्लाई करी बाहर करि परिवे. अदरवाइज देखंतु 2 by 3 अछि 3 by 4 अछि 4 by 5 and 5 by 6 अछि. तो एटा 2 by 3 को 20 by 3 कंसीडर करि पारि. ताले 20 by 3 हेले केते होछि एटा 0.66 एटा 30 by 4 करंतु दैट इज 0.75 एटा 40 गले 5 अष्टा 40 0.8 एटा 50 गले दैट इज 0.83 आसीबो. इट मींस कोन 2 by 3 2 by 3 आसले आपनकर स्मॉलेस्ट एंड 5 by 6 आसी होछि दैट इज लार्जेस्ट. ताले मान भितर डिफरेंस केते आसीबो 5 by 6 minus 2 by 3 दैट इज केते आसीबो डिफरेंस देखंतु 6 आसीबो 5 minus 4 1 by 6 is your answer. 1 by 6 समस्त आंसर आछि कि ऑप्शन 3 हबो यार राइट आंसर. नेक्स्ट सिंप्लिफिकेशन रो क्वेश्चन 91.91 9.191 0.9191 को जेतला आपण एडिशन करिवे यार राइट आंसर केते आसीबो. यार राइट आंसर केते आसीबो कोंतु 91.91. ओके देन रहिला आपनकर प्रथमे आमे एई दुइटा ऐड करिवा. प्रथमे एई दुइटा ऐड करिवा 9.191 एटा वेट करंतु केते आछी 1 9 1 10 0 रहइबो 1 9 1 10 9 1 10 1 11 रहइबो 1.81 आसीबो 9 2 12 9 1 10 1 11 1 पुनी 9 1 10 101.101 देन एटा आमे ऐड करिवा दैट इज 0.9191 देन देखंतु केते आछी एटा आपनकर 1 9 1 10 2 9 1 2 रहइबो एठारे देन 9 1 10 0 पॉइंट 1 आसला दैट इज 2 रहइबो 10 102.0201 which option 102.0201 option B your right answer. बहुत इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 ट्राई करिबा. The price of sugar is increased by 20%. How much percent reduce the consumption? There is no change in expenditure. देखंतु सुगर रो प्राइस कोन हला 20% बढ़ी गला 20% माने कोन दैट इज 1 by 5. इट मींस प्राइस प्रथमे केते थिला 5 थिला दैट इज ओरिजिनल वैल्यू एटा इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वैल्यू 5 थिला दैट इज 6 हला बट कंजम्पशन रे आपनकर कोन हबो कोनोसी भी चेंज हबो नाही. How much percent reduce the consumption? There is no change in expenditure. Sorry, expenditure change हबो नाही माने expenditure constant ताले consumption ता कोन हिजो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हिजो 6 टा आपनकर 5 हबो ताले देखंतु आपन केते रिड्यूस करिवार अछि 1 रिड्यूस करिवार अछि केते रे 6 रे 1 by 6 multiply 100 that is 16 integer 2 by 3% which is 16.67% रो आपन रिड्यूस करिवार अछि. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. The sum of all natural number from 51 to 100 is
51 to 100 प्रथम आम 1 to 100 कंसीडर करबा ताले n into n plus 1 by 2 100 into 101 by 2 minus 1 to 50 आम कोन करचंदी एठारे कंसीडर करचंदी ताले 1 to 50 एठारे माइनस करबा ताले 50 into 51 by 2 करंतु देन केते सेटा आपनकर 5 एटा आसीबो आपनकर 50 रे कटिबो तो 5050 माइनस एटा 25 रे कटिबो ओके ताले 25 into 51 केते आसी 1275 राइट आंसर इज 3775 इज योर राइट आंसर समस्त आंसर आछि ऑप्शन ए हबो राइट आंसर 3775 इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 ट्राई करंतु ट्राई करिया क्वेश्चन नंबर 88 which option is your right answer a 15-liter solution is 40% sugar if 3 liters of pure water is added what is the new percentage of sugar in the solution original sugar kete 40% of 15 liter 40% of 15 liter माने केते 15 liter रो 40% केते आसीबो 15 into 2 by 5 15 into 2 by 5 that is 6 liter एटा होची ओरिजिनल सुगर देन न्यू वॉल्यूम टा केते आसीबो प्रथमे थिला 15 लिटर पुनी सेथिरे आपण 3 लिटर ऐड कले दैट इज 18 लिटर एटा न्यू वॉल्यूम ताले पचारिची what is the new percentage of sugar in the solution new percentage of the sugar in the solution केते आसीबो 6 by 18 कर दियंतु मल्टीप्लाई 100 करिबा दैट इज आपनकर आंसर आसीबो केते आसीबो 7 18 1 by 3 into 100 33 integer 33 percentage is your right answer option B is your right answer next question number 89 इटा सिंपलीफाई करिबा 20 plus then square bracket 6 minus then bracket okay कुटिल बंधनी 3 minus then चंद्र बंधनी 5 minus 2 रो स्क्वायर then कुटिल बंधनी आपनकर then वर्ग बंधनी ट्राई करंतु which option है प्रथम एटा आसीबो 5 रो 2 इटी कोन हो माइनस हो माने 3 3 रो स्क्वायर 9 हो ओके देन एटा रहइबो कोन आपनकर 3 minus 9 रहइबो 3 minus 9 टा केते आसीबो minus 6 then minus minus plus 6 है means 20 plus एमिति रहइबो आपनकर 6 plus 6 आसीबो कि नो okay then 20 plus 12 that is 32 is your right answer option B 32 हबो यार right answer next question number 90 try करिबा a student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3 से कोन करछि 3 by 5 को मल्टीप्लाई करछि किंतु ताको 5 by 3 मल्टीप्लाई करिवातला एहा बदल रे एटा करछि माने एटा होछि आपनकर राइट वैल्यू दैट इज राइट वैल्यू ओके ताले व्हाट इज द परसेंटेज एरर क्रॉस मल्टीप्लाई करिवा दैट इज केता 3 3 9 देन 5 5 25 ताले देखंतु केते एरर आसिला 16 बाय राइट वैल्यू रो हमें एठी नबा बाय राइट वैल्यू 16 by 25 multiply 100 25 चौकु 100 16 चौकु 64 64% रो एरर रहिछ परसेंटेज एरर 64% ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 ट्राई करिवा a fruit seller sells mangoes at the rate of 9 per kg and thereby lost 20% at what price per kg he should have sold them to make a profit of 5% try करंतु which option is your right answer which option is your right answer a fruit seller sells mangoes at the rate of 9 per kg ठीक अछि 9 per kg रे and thereby lost 20% कोन होछि then 20% आपनकर लॉस हला at what price per kg he should have sold them to make a profit of 5% केते रे बिकिबे so that 5% रो प्रॉफिट हेबो तो क्वेश्चन नंबर 91 आपण कमेंट सेक्शन रे जणाई परिबे ओके ट्राई करंतु राइट आंसर कोन हबो आपण कमेंट सेक्शन रे जणांतु नेक्स्ट एटा आपण को पई रहला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 a shopkeeper cheats to the extent of 10% while buying and selling by using false weight his total gain is केते हबो एटा को एबी मेथड रे नियंतु ठीक अछि 10% चीट करछि 10 plus 10 plus 10 into
10 by 100 that is केते हबो 20 plus 1 that is 21% आपनकर राइट आंसर आसीबो एटा बाइंग रो चीटिंग ओके देन एटा सेलिंग रो चीटिंग तो एबी मेथड कोन एटा आपनकर a plus b plus ab by 100 ए फार्मूला अनुसार करि परिबे अदरवाइज आपण रेशियो मेथड मध्ये यूज करि परिबे ऑप्शन बी हबो राइट आंसर डायरेक्ट आंसर आसीबो नेक्स्ट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीस 7500 एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर रे कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर करिया पई कहिछि 7500 रो 4% केते आसीबो 300 आसीबो पुनी 300 रो 4% केते आसीबो 12 आसीबो ताले रेशियो मेथड अनुसार एथिरे आपण 2 मल्टीप्लाई करिवे एथिरे 1 मल्टीप्लाई करिवे बिकॉज़ 2 ईयर रो कंपाउंड इंटरेस्ट रो रेशियो होछि 2:1 सिंपली मन रखंतु ताले एटा केते आसी 600 एटा आसला आपनकर 12 612 आसला इस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 the percentage increase in the area of rectangle if each of its side is increased by 20% each ताले एरिया रे केते परसेंटेज इंक्रीज हो से पचारि क्वेश्चन नंबर 94 देखंतु 20% ना इंक्रीज होछि माने कोन एटा 1/5 तो 5 थिला दैट इज 6 हला देन आपनकर 5 थिला 6 हला साइड गोटे रेक्टेंगल रो दुईटा साइड ताले केते एठी हला 25 टा आपनकर 36 हला तो 11 बढ़िला केते रे 25 रे मल्टीप्लाई 100 कले दैट इज 25 चौकु 100 84% आपनकर एरिया रे इफेक्ट आसीबो 84% ऑप्शन डी हो राइट आंसर नेक्स्ट द डायगोनल ऑफ टू स्क्वायर्स आर इन द रेशियो 2:5 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया ताले तार एरिया रो रेशियो केथा हो देखो 2:5 जदी डायगोनल अछि सिंपली यार स्क्वायर करंतु 4:25 होबो कोन दैट इज डायरेक्ट आंसर बिकॉज़ डायगोनल को जेतले स्क्वायर करबे तार एरिया रे इंपैक्ट आसी जिवो द रेशियो ऑफ द एरिया आसीबो 4:25 ऑप्शन ए होबो यार राइट आंसर नेक्स्ट the base of a triangle is 15 centimeter height is 12 centimeter okay the height of another triangle of double the area having the base 20 centimeter each ताले कोन पचरछि एठारे कोन पचरछि देखंतु the base of a triangle is 15 centimeter and height होछि 12 centimeter the height of अन्य एक ट्रायंगल रो डबल हबो the area having the base 20 centimeter each it means हमें जदि ट्रायंगल 1 विषय रे कथा हबा that is base given अछि 15 centimeter height given अछि 12 centimeter ट्रायंगल 2 विषय रे जदि कथा हबा यार base given अछि 20 centimeter then height कहिछि that is 2 into triangle 1 रो एरिया हो ना एरिया हैविंग बेस 20 सेंटीमीटर ताला हमहु एठी हाइट बाहर करियार अछि केमिति बाहर करियो हाइट बाहर करियार अछि ट्राई करंतु देखंतु फर्स्ट रो एरिया केते आसीबो हाफ इनटू भूमि इनटू उच्चता बेस इनटू हाइट दैट इज आपनकर हाफ इनटू 15 गुणन 12 सह 15 6 को 90 दैट इज 90 आसी गला यार कोन 90 मीटर आसी गला दैट इज आपनकर एरिया क्लियर 90 मीटर जदि आपनकर एरिया आसी जिवो देन आमे ट्रायंगल 2 विषय रे जदि कथा बा ताले ट्रायंगल 2 रो केते आसीबो एटा देखंतु ट्रायंगल 2 टा आसीबो एटार एरिया को जदि हम जिबा हाफ इनटू भूमि इनटू उच्चता हाफ इनटू दैट इज 20 which given अछि बेस्ट होछि 20 इनटू हाइट देन दैट इज 2 into 90 2 into 90 देखंतु 2 into 90 दैट इज 180 180 ताले एटा केते आसीबो आपनकर 2 10 रे कटिला ताले h आसीबो आपनकर 18 सेंटीमीटर 180 बाय 10 18 सेंटीमीटर हाइट केते आसिला ऑप्शन सी 18 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर क्लियर समस्त आंसर आछि देन जिबा क्वेश्चन नंबर 97 if 40% of a number is equal to 2/3 of another number what is the ratio of first number to second number ताले फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर रेशियो केते से आसीबो पचरछि सिंपली देखंतु 40% माने केते 40% माने होछि 2/5 नो डाउट
ताहले मने कर गोटे नंबर होची x 2/5 of x equals to that is 2/3 माने 2/3 of y ताले एठार x by y करंतु x is to y टा केते आसीबो देखंतु x is to y टा आसीबो आपनकर 2/3 रेशियो 2/5 आसीबो ओके दैट इज 5 दुने क्रॉस मल्टीप्लाई करिया 5 दुने 10 देन 3 दुने 6 तो 5 अनुपात 3 आसीबो आपनकर यार उत्तर आंसर केते आसी 5:3 ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर क्लियर समस्त आंसर आसी क्वेश्चन नंबर 97 then question number 98 Raju age after 15 years will be 5 times his age 5 years back what is the present age of Raju Raju ro present age केते से पचारी छी देखंतु present age टा मने करो नबा हमें x year ताहले 15 वर्ष पर केते आसीबो 15 वर्ष पर x plus 15 years okay and 5 years back केते रहइबो minus 5 year केते हबो that is x minus 5 year according to question what is the present age of Raju x plus 15 equal to that is 5 year back x minus 5 okay it अपन क्वेश्चन कहि तो Raju age after 15 year will be हबो केते 5 times is 5 year back and x minus 5 and it solve करंतु x plus 15 equals to 5x minus 25 that is 4x रो वैल्यू केते आसीबो 40 आसीबो x रो वैल्यू आसीगला 10 so answer which option C what is the present age of Raju 10 year next question number 99 selling price of 15 articles is equal to the cost price of 20 articles find profit or loss percentage 15 टा आर्टिकल रो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जहा 20 टी आर्टिकल रो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य ताहा ताहले एठारे आपन को प्रॉफिट और लॉस होची केमे बाहर करबा सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एटा आपन कटाकटी करि परिबे और 20/15 करि परिबे दैट इज केता आछी 20 टंका विक्रय मूल्य बेले दैट इज कोन हबो 20 टंका विक्रय मूल्य बेले 15 टंका होची क्रय मूल्य ऑब्वियसली लाभ हबो केते टंका 5 रुपीस रो लाभ हबो केते टंका रे 15 टंका रे गुणन 100 करंतु तेन एटा कटाकटी करिया 5 3 15 1/3 into 100 that is 33.33% is your right answer आज रो लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 the difference between the compound interest and simple interest on rupees x extra माने कोन that is मूलधन okay at 8% यार सुध हार समयटा गिवन अछि 2 year then difference given अछि CI and SI रो 19 टंका 20 पैसा what is the value of x x रो value केते आसीबो कोन x रो value केते आसीबो कहबा आपण डायरेक्ट फार्मूला पुट करबी बाहर करि परिबे ओके अदरवाइज आपण ट्रिक माध्यम रे मते बाहर करि परिबे क्वेश्चन नंबर 100 व्हाट्स योर राइट आंसर ट्राई करंतु we know CI minus SI हमें equals to P into rate of interest रो square by 100 रो square तो एटा नै भी हमें बाहर करि परिबा नो डाउट देन एई फार्मूला अनुसार आपण बाहर करि परिबे और आपण ट्रिक रहिछि जेमिति आपनकर 8% वैल्यू को निमते बाहर करि परिबे देन एई फार्मूला को पुट करी आपण हेर आंसर बाहर करंतु एंड कमेंट सेक्शन रे जणांतु यार राइट आंसर कोन आसीबो क्वेश्चन नंबर 100 रो राइट आंसर कोन हबो आपनको कमेंट सेक्शन रे जणाइबार अछि ओके तो या थिला आपनकर 100 क्वेश्चंस आपण एहारो पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करि परिबे ओके जॉइन करंतु एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रे आई होप ए मॉक टेस्ट टी आपण मानक पई बहुत यूजफुल हबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास